Rajasthan High Court. Yeah. And there is no order of any court anywhere in the country pending against it which says, and there cannot be because after all the matter is pending before the Supreme Court, therefore Correct. no other court has any jurisdiction. So till such time as the Supreme Court rules adversely in the case of PACL, well, there isn't very much that anybody can do. So my only point is, since when in this country, and as far as you are concerned, you are an advocate yourself, when does a district magistrate have jurisdiction over and above the Supreme Court? Mr. Timley. That's a bad thing. That's a bad thing. Right, because the point is, if anybody has any complaint, if there is a fraud which is being perpetrated on anyone, anywhere in the country, where does the protocol lie? Where does the writ lie? I think the writ lies in the Supreme Court. Yeah, so perhaps absolutely. people should implead themselves in the case in the Supreme Court if they are the aggrieved party. Yeah. Right, Mr. Timley, thank you very much for calling. Thanks a lot, Great pleasure. Bajaj. Thanks a lot. Thank you very much for calling. Thank you so much. That was Mr. Dilip Timley calling us and telling us all about the fact that as far as PACL is concerned, everything is not as it seems. So, first call that we've got against PACL. But even over there, Mr. Timley agreed with us. Mr. Timley साहब जो हैं, एडवोकेट टिमले साहब, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया, बल्कि रजामंदी दी कि अगर किसी को कोई भी शिकायत है तो उसको उच्चतम न्यायालय के सामने जाना पड़ेगा. फोरम क्या है? उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपनी सुनवाई करवा सकते हैं. क्योंकि पीएसीएल और सेबी का जो मैटर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मैटर है, वो उच्चतम न्यायालय के सामने है. और उच्चतम न्यायालय के सामने अगर कोई मैटर है, उस मैटर में अगर किसी को, उस विषय में अगर किसी को कोई हिदायत पानी है या रूलिंग देनी है, तो उसका फोरम क्या है? उच्चतम न्यायालय है, यानी सुप्रीम कोर्ट है. एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन सेइंग, बिकॉज नो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैन हैव द पावर to act against an order of the Supreme Court. Now that is strange. It is really and truly strange what has taken place. What has taken place, I think is, it's not just this side of contempt of court. I think it is contempt of court. Anyway, that's my opinion for all that it is worth. Let's, we got another caller in, somebody else coming in. As I said, we've got time enough just for another couple of calls. Hello? हेलो जी, शांतिदास जी, नमस्कार. हाँ नमस्कार जी. ना, कहाँ, चित्तौड़ से बोल रहे हैं आप? हाँ सर, चित्तौड़गढ़ कपन से बोल रहा हूँ सर मैं. जी, कहिए, हुक्म. हाँ सर जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये पीएसएल के बारे में जो भ्रामक चीजें आ रही है, ये सत्य है या ये सत्य है? ये आप बताएंगे. अगर आप पीएसएल से जुड़े हैं तो आप बताएं, क्या ये भ्रमित है या सत्य है? ये तो आप बताएंगे. ये तो मेरे को तो सारी असत्य लग रही है सर, क्योंकि आपको असत्य क्यों लग रही है? मेरे को इसलिए लग रही है सर कि मेरी वाइफ इसके तहत काम भी करती है, मैं इसका कस्टमर भी हूँ जी. और मेरे कम से कम 3-4 अकाउंट चल रहे हैं, मेरे फैमिली के चल रहे हैं, रिश्तेदारों को चल रहे हैं. किसी रिश्तेदार ने, किसी आपके रिश्तेदार ने या आपके खुद के अकाउंट में आज तक कभी कोई धांधली हुई? नहीं हुई है सर. बहुत पहले 98 में जब मैंने इसके तहत हाफ ईयरली 2 किस्तें डाली थी, उसी का भी मेरे को पेमेंट मिला. अभी तक मिल रहा है? उस समय भी मिला था, और उसके बाद फिर मैं बहुत बड़ा धीरे धीरे करता गया. और मेरी जो मिसेज है वो एक गृहिणी है, और गृहिणी के रूप में कोई मेरे मिलने वाला था. उन्होंने कहा हुआ ये फ्री है तो ये काम करना चाहे तो करना, तो वो काम भी करती है इसके तहत जी. तो लगभग उसने कुछ अकाउंट भी खोल रखे हैं, और इसमें टीम वर्क है तो वो भी करते हैं. लेकिन अभी हाल फिलहाल जो ये, लेकिन आप ये बताएं, चलिए हाल फिलहाल वो छोड़िए, किसी के कहने पर ना जाएं, आप अपना तजुर्बा बताएं. आप हमारे कहने पर भी ना जाएं. आप ये बताएं कि आपका तजुर्बा पीएसीएल को लेकर के ठीक है कि नहीं है? राइट है सर. आपको आपके पैसे मिले? बिल्कुल मिले सर. आपका चेक कभी बाउंस हुआ? नहीं हुआ सर. आज तक कभी भी जब भी इंटरेस्ट की डेट थी, क्या आपको निर्धारित समय पर आपका ब्याज मिला? बिल्कुल सर, ओके मिला था. और तो उसमें तो आगे फिर और बात करने की आवश्यकता क्या है? ये सर, ये इस तरह की जो अफवाहें ये चलती है, तो इससे पे कोई प्रतिबंध होना चाहिए. क्योंकि कितने ग्राहकों, अभी जैसे मेरे भी डर बैठा था यार ऐसा हो जाएगा तो प्री मैच्योरिटी है, तो कंपनी ने ऑल ओवर कर दिया, वही पैसे चाहो वो ले सकते हो. तो इस तरह लोगों का विश्वास, बहुत सारे ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग
मतलब डर के हमारे निकला लेते हैं, जी। तो अब लॉस ग्राहकों को जा रहा है। आप जब बताएं किसी ने शांतिदास बरामद- जी, शांतिदास हाँ जी आप बताएं कि ऐसा कोई क्यों कर रहा है? जब आपको निर्धारित समय पर इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका चेक आज तक कभी कोई बाउंस नहीं हुआ, आज तक कंपनी नहीं ने हुआ। कोई अपना वादा नहीं तोड़ा, आज तक कभी आपको कोई गलत वादा नहीं किया गया, तो ऐसा काम जी। कोई क्यों करेगा? आप ये बताइए, आपको क्या लगता हाँ है? सर, मेरे को ये लगता है कोई न कोई इसके पीछे साजिश हो सकती है, या इसको बदनाम करने की हो सकती है, ये भी हो सकता है। बदनाम करने की बात हो सकती है। जी, शांतिदास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। शांतिदास वैष्णव चित्तौड़ से हमारे साथ। Now let's take a look again at what's been happening as far as PACL is concerned. Let's take a look at that. और एक बार फिर मैं आपके सामने ये बात करना चाहता हूं कि ये सब जो लिखा हुआ आ रहा है आपके स्क्रीन पर, ये आप लोगों ने कहा है। ये एक तो हमारी तहकीकात है, उसके अलावा आप लोगों ने जो कहा है वही हम आपको दिखा रहे हैं कि आप लोग खुश हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग खुश हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग खुश हैं। Now, this is what the news of the world is. Again, let me put this across to you. Rupert Murdoch's media empire sank into deeper controversy, with former British Prime Minister Gordon Brown accusing newspapers from Rupert Murdoch's group of using known criminals to hack into his personal information. It is not only Brown, but other ministers and lawmakers who are up in arms against the 80-year-old media baron. And a spate of allegations against the group have plunged BSkyB shares now for the last 1 week. They've really plunged them. They're now going to hit rock bottom. That's what the speculation is. And for a former British Prime Minister to say something like that, I really and truly think this is terrible. Now, political momentum gathered on Tuesday for a sharp, if largely symbolic, rebuke to Mr. Murdoch's News Corporation in the form of parliamentary motion opposing the company's proposed takeover of the satellite broadcast giant BSkyB, that is British Sky Broadcasting. The government said that it would join the opposition Labour Party and support the motion on Wednesday, calling on Mr. Murdoch to abandon the $12 billion bid for the shares that his company does not already own. Mr. Murdoch had hoped to save the deal, which still needs regulatory approval, by shuttering the News of the World. Members of Parliament at a hearing on Tuesday questioned top police officials, including Assistant Commissioner John Yates, who was in charge of the initial hacking inquiry in 2006 and who declined to reopen it in 2009. Mr. Yates said that in hindsight, had I known what I should have known, it was a poor decision, that is to shut down the inquiry. A separate parliamentary committee on Tuesday said it would summon Mr. Murdoch, his son James, and Rebecca Brooks, the chief executive of News Corp's British newspaper group, known as News International, to testify before the committee next week. Now, the former Prime Minister, Mr. Brown, accused the Sunday Times, owned by News International, the British subsidiary of Mr. Murdoch's News Corp, of employing known criminals to gather personal information on his bank account, legal files and other files, documentation, tax and everything else. That's what Gordon Brown said, and he was talking to the BBC. I think that what happened pretty early on in government is that the Sunday Times appear to have got access to my building society account, they got access to my legal files. There is some question mark about what happened to other files, documentation, tax and everything else. I am shocked, I am genuinely shocked to find that this happened because of their links with criminals, known criminals who are undertaking this activity, hired by investigators working with the Sunday Times.
Gordon Brown also said, I just can't understand this. If I, with all the protection and all the defences and all the security that a Chancellor of the Exchequer or a Prime Minister has, am so vulnerable to unscrupulous tactics, unlawful tactics, methods that have been used in the way we have found, what about the ordinary citizen? The Guardian newspaper, by the way, had reported earlier that Mr. Brown's bank, Abbey National, alerted him that someone acting for the Sunday Times had posed in his name, a practice commonly referred to as identity theft or blagging, to obtain details of his accounts 6 times in the year 2000 when he was Chancellor. Now, this is what we are looking at. This is what we are looking at. Rupert Murdoch used criminals. Rupert Murdoch's organization used Rupert Murdoch's news organization used criminals to hack into the account of the former British Prime Minister Gordon Brown. Now, as Gordon Brown himself says, if he wasn't safe, then who is? Now, that's the kind of organization we are dealing with. That's the kind of ruthless organization that you are dealing with over here. My point is, what are we doing about it? In this country, are we going to import that kind of culture here in this country? क्या उस किस्म की संस्कृति हम यहां पर उसका आयात कर रहे हैं ताकि अगले दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के अकाउंट में क्या है, उनकी टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस में क्या है, वो भी हम लोग अपने अखबारों में छापें, अपने टेलीविजन चैनल्स पर दिखाएं, या उसके द्वारा अपने मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को और अन्य लोगों को किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करें और उन पर दबाव डालें. We are dealing with that kind of an organization.